Evening, students. Good evening to all of you. Give me the clearance, please, boys and girls. Saurav, Saurabha. Am I audible and visible? Tech and Games. Good evening. Everything clear. So, very good evening to all of you. Welcome to PW platform Gatewala segment. Khalil Khan here, operating system course in fast track mode. And the topic of discussion today would be on deadlocks. The last part of process management module, and an important topic from GATE exam perspective. A lot of questions have been asked from in previous papers in the domain of deadlocks, in the chapter of deadlocks. So, Prem Shilu, Walaikum Salam. So, good evening again to all people. So, बच्चों, आज का discussion deadlock chapter start करने से पहले we'll work out a couple of problems from synchronization leftover which I gave as homework in the last class, and then we'll have a quick review with regard to classical IPC problems. फिर थोड़ा बहुत concurrency के बारे में भी discuss करेंगे, revise करेंगे, फिर उसके बाद हम start करेंगे deadlocks. ये हमारा discussion होगा आज की class का. चलिए start करेंगे. So last class we had this and deadlocks में हम ये topic discuss करेंगे. तो सबसे पहले ये question लेते हैं बच्चों. Let's try to review this problem. I gave this as a homework in the last class. There are two binary semaphores. I'm defining the binary semaphore as BSEM in short. Binary semaphore S equal to 1, T equal to 1. Very popular question. It's a very, very popular question. ठीक है? So let's see it. The process I perform the operations down of S and down on T, then critical section up on T and upon S, and process J perform down on T and then down on S, and then critical section upon T, upon S and upon T. So here I would like to emphasize that this is the entry section for process I, this is the entry section for process J, and this is the exit section for process I, exit section for process J. There are two questions asked in this problem as you see here. The first question is, does this mechanism described here between process I and J, does it guarantee mutual exclusion or not? Come on, that's the first question. Does it guarantee mutual exclusion or not? You have to say whether it guarantee between process I and process J mutual exclusion or not. Come on, tell me. Porous Prajapati, good evening. Answer the question. Does it guarantee mutual exclusion or not? लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि अगर आप प्रूफ करना चाह रहे हो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट गारंटीड, तो मतलब आपने प्रूफ करना है कि बोथ प्रोसेसेस समहाउ शुड बी इन क्रिटिकल सेक्शन, मोर देन वन प्रोसेस शुड बी इन क्रिटिकल सेक्शन. तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर बताना है बच्चों, इज इट पॉसिबल दैट बोथ प्रोसेसेस कैन बी इन क्रिटिकल सेक्शन टुगेदर एट द सेम टाइम? क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल इन एनी वे that both PI and PJ can be in critical section together at the same time? Is it possible? That's impossible. ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है कि both processes can be in critical section, because अगर if you perform down on S, down on T successfully, then later P or J cannot enter critical section. So therefore,
in whatever order you execute, in whatever fashion you execute, this will always guarantee that, this will always make sure that mutual exclusion is guaranteed. Second question is, can there be a potential possibility of a deadlock happening here? बोलिएगा बच्चों. Is there any potential possibility of deadlock happening between both the processes? क्या deadlock हो सकता है यहाँ पर? Between process I and process J, can deadlock happen? Come on, tell me, boys and girls. Can deadlock happen? Come on, I'm not getting responses. Is it delay in the channel or what? Come on, what do you say? Wasip, Saurav, Tech and Games, what is your response? Does this mechanism ensure that there is a deadlock or no deadlock? बोलिए, क्या deadlock होगा या ना होगा? How about deadlock? There can be a deadlock. Yes, Rakshit, that's right. Yes, that's right. Can you tell me, also write in the chat box, deadlock कब होगा? What is the necessary condition? What is the condition necessary to be happening here, to be present here for a deadlock to happen? Deadlock कब होगा? देखिएगा, deadlock हमेशा नहीं होगा. Deadlock is not always possible. So can you tell me, yes, Saurabha, can you tell me under what circumstances, what is the necessary condition for a deadlock to happen in this case, in this problem? Deadlock होने के लिए necessary condition क्या है? What is the necessary condition? Come on, tell me please. Under what circumstantial situation does deadlock happen here? I say that deadlock does not happen always. तो वही कह रहा हूं कि कब होगा deadlock? What is the necessary condition for a deadlock to happen here? The necessary condition is that, बोलिए, write down in the chat box. When both process check to enter critical section, both processes are updating values of P. Not updating values of P. We will say that processes should get preempted. Should get preempted between the two P operations. There are two P operations, two down operations. दोनों down operations के बीच में अगर preemption हो, like you start with process I, perform down on S, preempt, and then you come to process J, the perform down on T, success. Now S is 0, T is 0. Eventually both the processes will get blocked in their second down operation. वहाँ पर block हो जाएंगे, right? So therefore the necessary condition for a deadlock to happen is that processes should get preempted between the two down operations. तो ऐसे आप solve करोगे. Third question जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन मैं अपने से पूछ रहा हूँ आपको, what change are we supposed to make? What change are we supposed to make the system deadlock free? चलिए देखेंगे कौन बताएगा आंसर. अगर ये solution को आप deadlock free ensure करना चाह रहे हो, if you want to make this solution deadlock free, can anybody tell me what is the change are we supposed to make? Aniket Raj, good evening. Tell me. Answer the question. What change are we supposed to make in the solution so that the solution become deadlock free? बोलिएगा. देखेंगे who will answer. अगर आप ये चाह रहे हो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी गारंटी होना चाहिए और डेडलॉक भी ना होना चाहिए, then what change are we supposed to make in the code? कोड में क्या चेंज करना होगा? What are we supposed to do in the code so that there is no deadlock here? Not I don't need any flag. Rakshit, we don't need any flag. The point is very simple. No, Rakshit, we don't have to use any flag. Somebody has said, Rahul Singh said, same order of execution of down of S. No, Tech and Games, it is not like no preemption.
Preemption हो सकता है, preemption is possible. With preemption also you can make sure the system is deadlock free. कैसे करोगे? Very simple. The down operation should be performed in the same order. मतलब ये दो statements, for example, here you have to interchange. Right now they are performing in reverse order. Down on S, down on T, down on T, down on S. अगर दोनों processes में अगर आपने down operations का order same maintain किया, if both the processes are performing down operation in the same order, down on S, down on T, down on S, down on T, तब deadlock कभी भी नहीं होगा. चेक कर सकते हो आप. These are the important things for this problem to learn about deadlocks, जो हमारा next chapter है. ये बहुत important problem है to study the characterization of deadlock with regard to semaphores. With regard to semaphores. So you have to swap these two operations. Meaning both the processes should perform the down operations on semaphores in the same order rather than, अब यहाँ पर क्या है, reverse order में है, तो same order में अगर आप perform करोगे तो फिर deadlock नहीं होगा. ये है answer for this. तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. हैव अ लुक एट इट. दिस आल्सो a star question बच्चों. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स. दिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स. देखिएगा, लेट अस अंडरस्टैंड. मेनी पीपल गो कंफ्यूज विद दिस प्रॉब्लम. कई बच्चे रॉन्ग हो जाते हैं while trying to solve the problem. Let's see it here. There are three concurrent processes: process I, process J, process K. There are three binary semaphores S, T and Z. S is 1, T is 0, Z is 0. Very important problem of synchronization using semaphores. Process I execute in this fashion. Point to be noted is that the process I is running infinitely in the while loop. एक while loop है. Whereas process J, there is no while loop. Process J is executing only once. सिर्फ एक ही बार execute करेगा. Process K will also execute this only once and terminate. Question is, listen to me. What is the minimum and maximum number of times star that get printed? देखिएगा, प्रोसेस आई में हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं. दैट गेट प्रिंटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, यहां पर एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस जे एंड प्रोसेस के एंड बिफोर प्रोसेस आई, before process I getting block. Before process I getting blocked. चलिए है आंसर क्वेश्चन. देखेंगे how many students will respond correctly to this question. Process I is performing down on S, print star upon T upon Z. Process J is performing down on T upon S. Process K is performed down on Z upon S. तो चलिए बताइएगा. What is your response? Let me see. How many minimum times star will get printed? How many maximum times star get printed? Very, very important question as far as GATE exam is concerned. Come on, boys and girls, please respond.
Anybody? Any answers? What is the minimum time and maximum time star get printed? Come on, that's not difficult. Oh my God, S series is saying infinite. No, it is not infinite. I'll give you 2 minutes. Think well and tell. You can execute the processes in any order. आप process I से start कर सकते हो या J से start कर सकते हो या K से भी start कर सकते हो. कोई भी process से आप start कर सकते हो. But the condition is J and K should get terminated, should get completed, and process I should get block. Process I block होने से पहले और process J and K complete होने के बाद, what is the minimum and maximum number of times that star can get printed? Okay. Let's start. देखिएगा बच्चों यहाँ पर, if I start with process J, down on T will get block because T is 0. Yeah, Arya Jain, that's right. Arya Jain is right. Come on, if you start with process K, it will get block. So matlab J and K are not going to open their accounts. Now, for example, if I start with process I, down on S is 1 success. Then we say print star. So first time I'm executing, first case. So first time it has printed star. अब उसके बाद it say upon T upon Z. So that is going to wake up J and K. Now process J gets woken up. Process K also gets woken up. अब यहाँ पर मेरे पास दो possibilities है. Either I can complete both of them or I can complete one of them and again come back to I. There are two possibilities. तो सबसे पहले हम ये possibility लेंगे. Let us say that both are completed. Process I के बाद when it has woken up upon T upon Z, let's say it got preempted, process I, and then we come to process J upon T upon S. Sorry, down on T success upon S. Now upon S will become 1. S become 1. Then I complete process K. Down on Z success and upon S. So S become again 1. तो बच्चों अब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ है process J and process K are completed. Process J and process K are completed. Are you getting? उसके बाद I can come back to process I. Now the value of S is 1 because of this up operation. The value of S is 1. तो उससे क्या होगा? Then we come back to process I, go back here and perform down on S. S becomes 0, success. Print star. So we will be able to print star one more time. Second iteration. फिर उसके बाद I say upon T, no problem. T become 1 upon Z, Z become 1. But process J and process K are terminated. फिर उसके बाद क्या होगा? You go back to process I, again continue the third round. Because S is 0, you get block. तो मतलब in this order if I complete, in this order, what order? First process I, देखिएगा order यहाँ पे लिख लेंगे. This order is, first I have completed process I, one iteration. Then I completed process J. Then I completed process K. Then I went to the second round of process I successful. Then I went to third round of process I get block. ये order. In this order if I execute, the number of times that star get printed is 2. एक और order हो सकता है. वो order क्या है? Let us try to analyze. ठीक है? So like earlier occasion, I start with process I. So print star. Then upon T upon Z, then I come to process J. Look at this. I come to process J. It will perform down on T success upon S. Success. So S become 1. I come back to process I. इसके बाद हम फिर से process I पर आए हैं. Look at the sequence. Earlier was I, J, K. But now I, J, I. We have come back to process I. So now S is 1. Again it becomes 0. Print star. So it will print second star. Process J is over. Right? And then after that I come to process K. Process K क्या करेगा? It will perform upon S again third time. Second time it was done by process J. Third time it will be done by process K. So S become 1. So process J is over, process K is over.
again I come to process I, success hoga, it will print third star, and then process I, because J and K are over, process I will go back in the iteration and get stuck. So here I got star 3 times. I got star 3 times. So if I execute the processes, ये order आपको बनाना जरूरी है. So I, then J, then K, then I, then again I 2 times. If I execute I, J, then I, then K, then I, again I get blocked 3 times. So before the process K get blocked, before process J and K get terminated, the minimum number of stars is 2, the maximum number of stars are 3. Maximum number of stars are 3. So that is the approach of solving this problem. ठीक है? That is the way we can solve. I एक small change पूछूंगा, देखेंगे कितने बच्चे respond करेंगे, देखेंगे कितने बच्चे respond करेंगे. Now for example, remember in this loop, in this code of process J, if I write a while loop, बच्चों सुनिएगा, if I write a while loop, while of 1, अगर हम इस तरीके से while of 1 लिखेंगे in process J, can you tell me now how many stars will get printed? That's interesting. That will be interesting. How many times star will get printed if process J is placed in the while loop, while of 1? अगर process J को हम while of 1 में रखेंगे, मतलब it will run continuously or infinitely. Now what is the answer? How many times star get printed? Now process I will not terminate, process J will not terminate, process K may terminate. K terminate हो सकता है, J और I terminate नहीं होंगे. तो now how many times star get printed? Continuously print होते जाएंगे. Because this fellow will get keep on block and this fellow will keep on waking up. So as Tech and Game said, so now the number of stars that get printed will be infinite. इस तरीके से आपने analyze करना है questions. ठीक है? इस तरीके से analyze करना है. So I will get now infinite number of stars. चलिए. Next जो other applications है semaphore के जो आपने पढ़ना है, जो आपने revise करना है, वो है classical IPC problems. Classical IPC problems. Now, boys and girls, there are 3 important classical IPC problems which, based on which there were questions asked in earlier papers. One is called producer-consumer problem, and the other is reader-writer problem. And the third one is dining philosopher's problem. Okay. It is important that you understand what is producer-consumer problem, what are the conditions of it, how we are solving the problem using semaphore. इसी तरह reader-writer problem में multiple readers, multiple writers के conditions क्या है, and how are we going to make sure that there is never any problem of inconsistency happening while reader and writer are trying to access the database. Very important problem is dining philosophers. This become the foundation. This become the foundation for solving the problems of deadlock. For solving the problem of deadlock, dining philosopher problem is the foundation. There are n philosophers, n forks placed in between them. Whenever a philosopher is hungry, he will try to take his left fork and then right fork, right? And then if all become hungry, and if everybody takes only one fork, left fork or right fork, then eventually the philosophers will go into a deadlock state. So how do we prevent a deadlock happening in dining philosopher using semaphore? How are we going to put a semaphore control on the dining philosopher? That is what we have to see. So मेरा जो original first crash course जो था, that is also the playlist is also available. There I have discussed somewhat about some dining philosopher and also reader writer and classical IPC problem of producer consumer. You can see at that particular in that particular video. ठीक है? Another aspect which I would recommend for you to basically make a good revision of is concurrency mechanisms. This is another area from where some questions were asked in earlier papers. Concurrency mechanisms. How to achieve concurrency? That is how to first decide. Two statements are concurrent. Bernstein's concurrency conditions. Two statements are said to be concurrent if and only if the output of one statement should not serve as input to the other. That means the intersection of the read and write states of the statement should be null, we said. Okay? So based on that,
some mechanisms are there like pair begin, pair end, co begin, co end, जो हमने discuss किया class में. So that can be used to achieve concurrency in programming. Like for example, take a simple problem. इस तरीके के problems आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा please. Like if I have a variable x is equal to y is equal to 10, and I have a concurrent block like this, co begin, x equal to 1, y is equal to y plus x, end, begin, y is equal to 3, x equal to x plus 4, end, co-end. Co-end का मतलब, co-begin का मतलब concurrent begin and concurrent end. So this is called the concurrent block, and within concurrent block I have two sequential blocks. You can name this as process P1, this is process P2. So boys and girls, please follow me. P1 and P2 are concurrent. मतलब there is no dependency between P1 and P2. कोई भी ऑर्डर में आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी ऑर्डर में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन बात याद रखने की यहां पर यह है कि ये जो दो स्टेटमेंट्स, हम इसे नंबर करेंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4. ये जो दो स्टेटमेंट्स है P1 एंड P2, दे आर सीक्वेंशियल. मतलब इन दोनों का ऑर्डर आपने मेंटेन करना है, लेकिन देयर इज नो ऑर्डर मेंटेनेंस बिटवीन P1 एंड P2. सो हियर आई एम आस्किंग यू फॉर एग्जांपल एज ए क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं बच्चों, प्लीज सोच समझ के बताइएगा, देखेंगे कितने बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे. व्हाट कैन बी द फाइनल वैल्यूज ऑफ x एंड y? बोलिएगा. एटलीस्ट यू गिव मी सम वैल्यूज, सम फाइनल वैल्यूज ऑफ x एंड y. देखेंगे. Please tell me at least some values of x and y. What can be the final values of x and y? Come on, let me see. Saksham, please try. There is nothing like confusion here. बहुत simple concept है ये. मैं solve करूंगा problem ये. आप try कीजिएगा पहले. You try first. ऐसे कई बार previous year questions में problems आए हैं. So try to make sure that you understand this as well. What can be the final values of x and y? What is it that you have to remember while solving such questions? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने जो रिमेंबर करना है वो ये है कि यू हैव टू एन्यूमरेट व्हाट ऑल ऑर्डर्स आर पॉसिबल फॉर एग्जीक्यूशन. देखिएगा, एक सिंपल ऑर्डर जो एग्जीक्यूशन के लिए होगा वो है, फॉर एग्जांपल आई कैन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स इन द ऑर्डर 1, 2, 3, 4 इस ऑर्डर में. अगर इफ आई एग्जीक्यूट इन दिस ऑर्डर, पहले 1, 2 कंप्लीट करूंगा, देन 3, 4, तो x विल बिकम 1, देन y इज इक्वल टू y प्लस x, so y विल बिकम 10. फिर उसके बाद y विल बिकम 3, so फाइनल वैल्यू ऑफ y इज 3, and x इज इक्वल टू x प्लस 4, x विल बिकम 5. so यहां पर अगर इफ आई एग्जीक्यूट इन दिस फैशन, द फाइनल वैल्यू ऑफ x विल बिकम 5 and the final value of y will become 3. चेक कीजिएगा. if I execute in this order, then I can get the final value of x as 5 and y is equal to 3. और एक सेकेंड ऑर्डर आपका हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल I can execute in reverse order. I will first complete 3 and 4 and then 1 and 2. अगर हम इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे, if you execute in this order, first 3, 4 and then 1, 2, then what can be the final values of x and y? तो यहां पर देखिएगा बच्चों, x is equal to 3, y is equal to x equal to x plus 4, so x will become 4 after this. Then I come here, x become 1, so मतलब x की वैल्यू फाइनल 1 होगी, and then y is equal to y plus x. y की वैल्यू कितनी है? 3 है. 3 plus 1, so y will become 4. उसी तरह I can have other possible orderings. बच्चों, I can have other possible orderings, जैसे कि first I will execute 1, then preempt 3, 4, then 2. If I execute in this fashion, can anybody tell me what will be the final values of x and y? Come on, tell me. If I execute in this order, what will be the final values of x and y? इस तरीके से आपने ट्रेस करना है, इस तरीके से आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है. 1, 3, 4, 2. If I do it, the final value of x will be 4, y will be 6. 1, so x become 1. Then 3, 4. Then y is equal to 3, x is equal to 5. 1 plus
1 plus 4, x will become 5. 1 plus 4. ठीक है, फिर उसके बाद हम 2 कंप्लीट करेंगे, y is equal to y plus 6. तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 3. 3 plus 5, it become 8. It will become like this. If I execute in the order 1, 3, 4, 1, 3, 4, then 2, x equal to 1 over, then y is equal to 3, then x is equal to x plus 4, x is 1, 1 plus 4, x become 5. So x is 5. Then I come over here, y is 3, 3 plus, x की वैल्यू 5 है 8, x equal to 5, y is equal to 8. उसी तरह I can have another order, I can have another sequence. क्या होगी sequence? For instance, you can first write, you can first execute 1 preempt, 3 preempt, then 2, 4. If you execute in this order, can you please tell me what will be the final value of x and y? Come on, do it and tell me. Do it and tell me. 1, 3, 2, 4. What will be the final value of x and y? Come on, boys and girls. Four and 6. X equal to, so therefore x equal to 1. Then y equal to 3. Then I am coming to 2. Y is equal to y plus x. So therefore y become 3 plus 1, 4. Y become 4. And x equal to x plus 4. X equal to x plus 4. Look at that. 4. X equal to x plus 4. So x is, earlier value of x is 1. Right? And now it become x plus 4. It become 5. Is it not? Is it not? 5, 4. इस तरीके से there can be other possible values of x and y also if you try all permutations which are possible. सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं बच्चों, सोच समझ के बता दिएगा. Is it possible to have a sequence like this? Is it possible to have a sequence like this? 4, 1, 2, 3. Is this sequence possible or not? Just answer me. Is this sequence possible or not? Is this possible? Is it possible to execute in this order? No, this is not possible. क्योंकि आपको जो linearity है individual, because of this begin and end you have to maintain. That is what you have to remember. 4 cannot come before 3. 4 cannot come before 3. This is not possible. This is not possible. This is not possible. Then I ask one more last question before I go to the next topic. Check here. Suppose if I remove this begin, if I remove this begin and end, if I remove this begin and end, question is, that means I have 1, 2, 3, 4. I have 1, 2, 3, 4. There is nothing like P1 and P2 now. 1, 2, 3, 4 enclosed in co-begin and co-end. Enclosed in co-begin and co-end. Then question is, how many permutations of executions are possible? How many permutations, how many possibilities, permutations of executions of statements 1, 2, 3, 4 are possible? Tell me. Now how many are possible? In how many different ways I can execute the 4 statements now? Now, if I have 1, 2, 3, 4 placed between co-begin and co-end. Very correct, very correct. Now I can have 4 factorial. Now I can have 4 factorial. And earlier you have to remove those combinations which start like 2, 1, 4, 3. You have to remove those combinations from 4 factorial. Then that will give you the number of possibilities for the previous case. For the previous case. So that is the approach of solving this problem. तो ये काफी important problem है, foundation problem है. Yet you take it as a foundation and try to work out all other questions. तो चलिए बच्चों का अब हम स्टार्ट करेंगे the topic on deadlocks. Right, so this is the main topic now. Deadlocks. The basic definition of deadlock is that 2 or more processes are said to be in deadlock if and only if they wait for the happening of an event which will never happen. Simple definition जो generally दिया जाता है, simple diagrammatic explanation जो दिया जाता है for deadlock, it is like this. It is like this. We have 2 processes and let's say there are 2 resources.
Resources could be hardware or software. So these process I, these process J, right? These some resource R1, this resource R2. Let's say process I is holding resource R1 and waiting for resource R2. PJ is holding resource R2 and waiting for resource R1. तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि process PI is waiting on PJ for releasing R2 and PJ is waiting on PI for releasing RI. So this is a conceptual definition of deadlock, conceptual view of deadlock. So two or more processes are said to be in deadlock if and only if they wait for the happening of an event which would never happen. So before, the main intention of this chapter is to study about various deadlock dealing strategies or deadlock handling strategies. So before coming to the deadlock handling strategies, there are some conceptual buildings you have to make up, like system model. What kind of system are we assuming for the study of deadlock? We always assume system consists of resources like CPU cycles, memory space, IO devices, and every process will request the resource, then will be use the resource if it is granted, and then finally will release the resource. So that is the system model we assume. A simple example of deadlock with semaphore मैंने already आपको discuss किया था पिछले problem में, down on S, down on T, down on T, down on S, वो एक deadlock situation था. अब रही बात characterization की, the first and foremost concept जिसके basis पर आप decide करोगे what are the necessary conditions for deadlock to happen. ये काफी important questions, theoretical questions previous year में आए हैं based on necessary conditions. तो देखिएगा बच्चों, for a deadlock to happen in IPC environment or among communicating processes, for a deadlock to happen, the important four necessary conditions are mutual exclusion, hold and wait, no preemption, and circular wait. Four conditions are necessary to be present in order for a deadlock to happen. Mutual exclusion का मतलब यह है कि there should exist some shared resources using which processes are communicating with each other. So if there is no shared resource, there is no communication. There is no communication means there is no deadlock. Simple point. Hold and wait. A situation, देखिएगा, a situation where a process is holding resource R1 waiting for R2, and a situation PJ is holding R2 and waiting for R1. So अगर hold and wait ना हो तो deadlock कभी भी नहीं होगा. Every hold and wait is not deadlock, लेकिन every deadlock implies hold and wait होना जरूरी है. बगैर होल्ड एंड वेट के डेडलॉक नहीं हो सकता, बगैर शेयर्ड रिसोर्सेज के डेडलॉक नहीं हो सकता. यह है मतलब नेसेसरी कंडीशन. थर्ड पॉइंट, नो प्रीएम्पशन. नो प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्स मतलब अगर आप प्रीवियस डायग्राम देखो, PI cannot take away R2 from PJ, PJ cannot take away R1 from PI. तो फॉर ए डेडलॉक टू हैपन कंपल्सरी ये है कि देयर शुड बी नो प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्स. मतलब प्रोसेसेस विल रिलीज द रिसोर्सेस वॉलंटरली. प्रोसेसेस जो है ना वो रिसोर्सेस को छोड़ेंगे वॉलंटरली. सो नो प्रीएम्पशन बिकम ए नेसेसरी कंडीशन. लास्ट कंडीशन जो है बच्चों फॉर ए डेडलॉक टू हैपन वो है सर्कुलर वेट. Means there should be a cyclic condition. PI waiting on PJ, PJ waiting on PI. Every cycle is not deadlock, but every deadlock implies the presence of a cycle. तो मतलब जो भी IPC एनवायरनमेंट में ये चार कंडीशन जब भी होंगे, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, होल्ड एंड वेट है, नो प्रीएम्पशन है, सर्कुलर वेट है, देन देयर इज एवरी लाइकलीहुड, एवरी पॉसिबिलिटी दैट सिस्टम, सच ए सिस्टम में गो इनटू डेडलॉक स्टेट. ये है मतलब. ज्ञानेश भारद्वाज, you're asking a question, am I from Hyderabad? Yes, I am from Hyderabad, Telangana. Any problem or any doubt that particularly you are asking that question? Bharadwaj, is there any reason, specific reason for asking that? Gyanesh Bharadwaj? Okay. तो ये है बच्चों necessary conditions for a deadlock to happen. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन जो जनरली हम स्टडी करते हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. जनरली वी राइट इन शॉर्ट एज RAG, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. जनरली वी डिफाइन ए ग्राफ एज सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एडजेस. वर्टिसेस आर ऑफ टू टाइप्स, देखिएगा ग्राफ में, द प्रोसेस वर्टेक्स और टास्क वर्टेक्स एंड रिसोर्स वर्टेक्स. रिसोर्सेस में भी सिंगल इंस्टेंस और मल्टी इंस्टेंस. तो देखिएगा यहां पर सिंगल इंस्टेंस डिनोटेड विथ वन डॉट, मल्टी इंस्टेंस विथ 2 dots एंड 3 dots लाइक दैट. तो मतलब दिस रिसोर्स हैज 1 copy, दिस रिसोर्स हैज 2 copies, दिस रिसोर्स हैज 3 copies.
So current state is T1 is blocked, T2 is blocked, T3 is not blocked. And in this situation, if T3 makes a request for copy of R4, it can be given. But if it makes a request for a copy of R2, then I put a requested like this and the process will get blocked. और अब यहाँ पर हमारे पास deadlock होगा. देखिएगा deadlock है. There is a cycle, long cycle, and no process, no task can come out from this cycle. Eventually, it will lead to a deadlock. So this cycle in this graph is a deadlock. लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये यहाँ पर देखिएगा, ये clear example है to demonstrate that every cycle is not deadlock, but every deadlock implies cycle. तो second resource allocation graph G2 जब देखोगे आप यहाँ पर, I have 4 tasks, 4 processes, T1, T2, T3, T4. So right now they are forming a cycle. Look at this cycle. T1, R1, T3, R2, T1. There is a cycle, but there is no deadlock. यहाँ पर देखिएगा बच्चों. So let me write. There is a cycle. There is a cycle right now, but no deadlock. Can anybody tell me? Let me see. Can anybody tell me? Can you please write down in the chat box and tell me? Even though we have a cycle, but I'm saying there is no deadlock here. Why? Why there is no deadlock even though we have a cycle here? बोलिए. यहाँ पर साइकिल है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि there is no deadlock. क्यों? ऐसा क्यों है? Why do you say there is no deadlock here even though we have a cycle? Can you please write down in the chat box? Come on, boys and girls. Can you please write down in the chat box? Why is it that we have a cycle, हमारे पास साइकिल है, but there is no deadlock? Why is it so? Why are you saying that even if after having a cycle, there is no deadlock here? That's an important concept. Generally, students get confused with respect to this. Come on, boys and girls. Rakshit, the point is, this resource is allocated to this process. This resource is allocated to this process. This process or task is requesting this resource. ये arrow representation का मतलब it is requesting this, it is requesting this, it is requesting this. Yes, people have started writing the comment. That's exactly correct. There is no deadlock even though I have a cycle because T2 and T4 are not waiting. They are only holding. They are only holding. They are not waiting. T2 is holding copy of R1 because the arrow is going like this. The arrow is going like this. If the arrow goes from process to resource, that is request, right? So therefore T2 and T4 are completable. They are completable. Or T2 अगर complete किया अपना execution, it will release R1 and that R1 can be given to T1. Likewise, if T4 complete and release R2, then can be given to T3. So therefore I am saying that there is a possibility for the processes to come out from cycle. There is a possibility of breaking the cycle. There is a possibility of breaking the cycle here, whereas in the previous graph, ये graph में, there is no possibility of breaking the cycle. There is no possibility of breaking the cycle. तो यहाँ पर आप ब्रेक कर सकते हो और पिछले ग्राफ में आप नहीं कर सकते हो. जहां पर आप साइकिल ब्रेक नहीं कर सकते वहां पर डेडलॉक होगा. जहां पर आप साइकिल ब्रेक कर सकते हो वहां पर डेडलॉक नहीं होगा. तो इसका मतलब सिंपल यही है कि एवरी साइकिल इज नॉट डेडलॉक, लेकिन एवरी डेडलॉक इंप्लाइज साइकिल. And hence we say hold and wait and cycle are necessary condition for deadlock to happen. Hold and wait and cycle are necessary condition for deadlock to happen. ये काफी important points है बच्चों. मैं चाहूंगा आप हमेशा के लिए याद रखिएगा. For as far as cycle is concerned in a graph and deadlock, ये important conditions है. Golden rules है ये. Point number 1. If graph contains no cycle means there is no deadlock. Point number 1. अगर ग्राफ में साइकिल ना हो तो डेडलॉक हमेशा नहीं रहेगा. इफ ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल, अगर ग्राफ में साइकिल हो, इफ देयर इज अ साइकिल, लेकिन इफ आई हैव ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स, हर रिसोर्स का सिर्फ एक ही इंस्टेंस हो, मल्टी इंस्टेंस नहीं है, देन ऑलवेज दैट इज अ डेडलॉक. मतलब सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेस में अगर साइकिल होगी तो मतलब वो पक्का डेडलॉक है, तो पक्का डेडलॉक है. इफ सेवरल इंस्टेंसेस, सेवरल का मतलब है मल्टी, सेवरल का है मतलब मल्टी, मतलब अगर ग्राफ में मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेस है, देन साइकिल इज ओनली अ नेसेसरी कंडीशन. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक बट वी कैन नॉट से ऑलवेज. ये अगर 3 पॉइंट्स अगर आप अच्छे तरीके से समझ के रिमेंबर करेंगे, देन आई एम वेरी श्योर जो क्वेश्चंस गेट में आए हैं PYQ या आगे आएंगे, आप अच्छे तरीके से
समझ सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज मुझे बताइएगा, इज दीज 3 पॉइंट्स क्लियर? नंबर 1, इफ देयर इज नो साइकिल देयर इज नो डेडलॉक। नंबर 2, if there is a cycle, there may or may not be deadlock if the resources are of multi-instance type. Number 3, if there is a cycle and resources are single instance, then there is always a deadlock. 3 पॉइंट्स है। ये तीनों पॉइंट्स हमेशा अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा। Okay, next we'll go on to what do you call it as the strategies, methods for dealing with deadlock. Strategies or methods for dealing with deadlock. Boys and girls, lot of problems have been asked in earlier papers based on methods or strategies, right? So important ones I'm highlighting here: number 1, number 2, number 3, number 4. 4 strategies: deadlock prevention, deadlock avoidance, and third is deadlock detection and recovery, and fourth one is deadlock ignorance. Deadlock ignorance. Prevention and avoidance. If I use prevention and avoidance, it will make sure that system never go into deadlock. Never go into deadlock. यहां पर deadlock कभी भी नहीं होगा अगर हम prevention या avoidance लेंगे। Prevention या avoidance, जैसा नाम बता रहा है आपको, prevent, avoid, मतलब deadlock will never happen. Deadlock will never happen if I use prevention and avoidance. Enter a deadlock state and then recover. Deadlock detection and recovery. तो यहां पर है deadlock can happen. In these 2 cases deadlock can happen. This is the fundamental difference between deadlock, the 4 deadlock strategies. The 4 deadlock strategies. So deadlock detection and recovery, deadlock can happen. Pretend that deadlock never occur in the system. मतलब deadlock will happen but you are pretending. तो ये है ignorance strategy. Ignorance strategy. The name of the ignorance strategy in the literature. Literature में deadlock ignorance को क्या बोलेंगे हम? Anybody? What is the name given to the ignorance strategy in the literature? Come on, boys and girls. कौन सा algorithm? It is named after a particular algorithm. What is algorithm for deadlock ignorance? Deadlock ignorance का नाम है ostrich algorithm. Ostrich algorithm. जिस तरह ostrich does not take any strategy for avoiding the problem, उसी तरह आपके पास भी कोई strategy नहीं रहेगी with regard to deadlock ignorance. तो मतलब यहाँ पर आपने simple terms में you have to restart the system because there is no strategy. जब भी आपका system stuck हो जाएगा, you are going to restart your system. That is called ostrich strategy or ostrich algorithm. Very correct. उसी तरह deadlock avoidance का भी नाम है बच्चों लिटरेचर में, ये आपने याद रखना है. Deadlock avoidance is named as Banker's algorithm. Is named as Banker's algorithm. तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा हर स्ट्रैटेजी के बारे में रिवाइज करेंगे इन ए क्रैश मोड और फास्ट ट्रैक मोड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन. कैन यू प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल आइडियोलॉजी ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन. देखेंगे कौन बताएगा. व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल आइडियोलॉजी ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन. डेडलॉक प्रिवेंशन की फंडामेंटल आइडियोलॉजी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? कैन एनीबॉडी राइट डाउन इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो द वे प्रिवेंशन वर्क्स. कैसे प्रिवेंट करोगे आप? बिकॉज इफ आई यूज दिस स्ट्रैटेजी इन द सिस्टम इट विल मेक श्योर दैट सिस्टम नेवर गोज इनटू डेडलॉक स्टेट. लेकिन आप प्रिवेंट कैसे करोगे? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड प्रिवेंशन? कैन एनीबॉडी राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? यस, दैट्स राइट Saksham. No, Rakshit, it is not like that. Saksham is saying that's right. So it is prevented by dissatisfying one or more of the necessary conditions. One or more of the necessary conditions. जो आपके नेसेसरी कंडीशंस है, अगर आप उसे नेगेट करोगे, उसे डिससैटिस्फाई करोगे, देन डेफिनेटली यू कैन नेचुरली प्रिवेंट द डेडलॉक. यस, रिमूव वन और मोर ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस. चलिए, तो हमें मतलब देखना होगा कि वन बाय वन, लाइक म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट कॉम्प्रोमाइजेबल एट एनी टाइम. दैट मींस यू कैन नॉट नेगेट इट.
क्यों? Because at every time there will always be some shareable resources. Some shareable resources. तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है कि आप टोटली मल्टी प्रोग्राम एनवायरनमेंट में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कॉम्प्रोमाइज करो. दैट्स नॉट पॉसिबल. देन यू हैव टू गो फॉर होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड वेट कैन बी डिससैटिस्फाइड विद टू कंडीशंस और टू प्रोटोकॉल्स. एक प्रोटोकॉल ये है, प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट ऑल द रिसोर्सेस बिफोर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन. अगर आप स्टार्ट करने से पहले पूरे के सारे रिसोर्सेस एक्वायर कर लोगे, यू विल नेवर गो इनटू वेटिंग स्टेट. मतलब आप हमेशा होल्डिंग कंडीशन में रहोगे, तो देयरफॉर देयर विल नेवर बी अ डेडलॉक. उसी तरह whenever you are requesting some resource, make sure that you release everything and make a new request. इस तरीके से भी. So that means either you should be in hold condition or wait condition, but not both. अगर आप ये गारंटी करो तो hold and wait can be dissatisfied. So therefore hold and wait practically can be dissatisfied. उसी तरह no preemption can be negated. आप preempt कर दो resource. You allow the processes to preempt the resources either forcibly or self preemption. Then that is also negatable. So you can negate no preemption. And finally, by implementing a total order relation on the processes and the resources in terms of the requests that they can make, you can make sure that circularity condition is also negatable. Circular condition can also be removed. So therefore, we say that out of 4 conditions, 3 conditions are definitely compromisable except for mutual exclusion, and you can prevent the deadlock. लेकिन problem ये है कि deadlock prevention में you may have to basically suffer from the problem of starvation. You may have to suffer from the problem of starvation. Okay, I mean, whether you go for preemption, whether you go for a dissatisfaction of hold and wait or circular wait, there is every possibility that the processes may suffer from the problem of starvation. So at the cost of starvation, you can prevent deadlock. Then you have what is called deadlock avoidance. Deadlock avoidance through Banker's algorithm. There are 2 algorithms here. One is for resource request algorithm for single instance type, and the other is for multi-instance resource general algorithm called Banker's algorithm. So यहाँ पर हम देखेंगे what is the basic ideology of Banker's algorithm. Banker's algorithm is based on a fundamental concept. Banker's algorithm is based on a fundamental concept called maintaining a priori information. Maintaining a priori information. A priori मतलब beforehand. मतलब you are forcing the process, you are forcing the processes to ask, to demand what is the requirement for resources before they start their execution. मतलब हर process ने अपना demand बताना है before starting their execution. What is the maximum number of copies, number of resources that a process P1 want for all the resources, P2 want for all the resources, P3 want for all the resources. So every process will have to make a demand for what resources that it wants throughout its lifetime, throughout its life cycle. And then based on that, the operating system would allocate, some resources. So this maintenance of the state in the form of various data structures is what is termed as system state. And the basic ideology of Banker's algorithm is, we say here, it will try, the basic logic I am writing down here, always try to operate the system, in safe mode, safe state या safe mode. Safe का मतलब है no deadlock. That means request जब भी process resources के करेंगे, you should make sure that the request will be granted, or request should be granted only if the resulting state is safe. अगर resulting state safe ना हो, तो आप resource हमेशा grant नहीं करेंगे. So request will be granted only if the resulting state is always safe. So basic ideology, basic logic of Banker's algorithm is to always operate the system in safe state, safe mode. तो उसके लिए कई डेटा स्ट्रक्चर्स हमें अब देखेंगे यहाँ पर एक एक करके. Right? So यहाँ पर देखिएगा, if system is in safe state, there is no deadlock. If system is unsafe state, then there is possibility of deadlock. So हम यहाँ बोलेंगे, this is just like a warning state. अगर unsafe आ रहा है मतलब warning है. अगर आप यहाँ पर careful नहीं रहोगे, then there is every likelihood that in near future you may go into deadlock state. तो basic logic of avoidance, मैंने ऐसे अभी कहा था, मैं इसे underline कर रहा हूँ बच्चों आपके लिए. The basic ideology of Banker's algorithm is this: ensure that
the system never enter into an unsafe state. That means system should always operate in safe mode. ये है बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम. डायग्रामेटिकली आप ऐसे समझोगे, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द सिस्टम कैन बी इन एनी ऑफ दीज थ्री स्टेट्स. System is said to be either safe or unsafe, or maybe from unsafe it will go to deadlock. And the basic logic of banker's algorithm, the basic ideology of banker's algorithm is to always operate the system in this safe mode. Never allow the system to go into unsafeness. So from safe आप unsafe पे जा सकते हो, from unsafe you may enter into deadlock, which should not happen from it. ठीक है? So that's the point. सो देखिएगा अब यहाँ पर बैंकर्स एल्गोरिथम के जो डेटा स्ट्रक्चर्स है हम यहाँ पर देखेंगे, और डेटा स्ट्रक्चर्स के बाद एक एग्जांपल भी लेकर हम यहाँ पर करेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड देन we'll go on to the next strategy. So please see here. We are assuming let n be the number of processes and m be the number of resources. तो फर्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है अवेलेबल. हाउ मेनी कॉपीज ऑफ रिसोर्सेस आर अवेलेबल? हाउ मेनी कॉपीज ऑफ रिसोर्सेस आर अवेलेबल? It's a vector, it's an array of size m indicating how many instances of each resource R is available. ये है a priori information बच्चों, max. ये जो है ना a priori information, मतलब you are forcing every process to tell what is your maximum demand. So therefore if I write like max of ij is equal to k, then it means process I is asking for k copies of resource rj. मतलब in its entire life cycle process I is asking for k copies of resource rj. Max के बाद है next data structure allocation. Against this max, how many are allocated? So if allocation of ij is equal to k, it means the process I is allocated k copies of resource rj. उसके बाद देखिएगा need, that means max demand हो गया है, allocation हो गई, तो balance need है. So if need of ij is equal to k means process pi need k copies of resource rj. तो मतलब ये हुआ need value is always max minus allocation. नीड की जो वैल्यू है वो हमेशा मैक्स माइनस एलोकेशन होगी. इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूं. इफ अ प्रोसेस इज आस्किंग मैक्सिमम 10 कॉपीज, तो मैक्स इज 10. ऑपरेटिंग सिस्टम हैज एलोकेटेड 3 कॉपीज, सो एलोकेशन इज 3. तो बचा कितना मैक्स? इसका नीड कितना हुआ? मैक्स इज 10, डिमांडिंग इज 10, एलोकेशन इज 3, तो नीड कितना हुआ? 10 माइनस 3, 7 हो गया नीड. सो नीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन. ये हमेशा याद रखिएगा आप. फिर उसके बाद अदर डेटा स्ट्रक्चर्स देखिएगा, अदर डेटा स्ट्रक्चर्स जो हम बाद में देखेंगे. अब देखिएगा, based on this let us take this information. I have 5 tasks, 5 processes T0 to T4. There are 3 resources ABC, but बच्चों follow कीजिएगा example clearly. This is called snapshot at time T0. There are 3 resources ABC. It is given that A has 10 copies, B has 5 copies, C has 7 copies. Multi-instance resource. This is the current allocation, current max and available. आपको पूछा जाएगा at time T0, is the system safe or unsafe? This is a question that will be asked. Is it safe or not? Is this current snapshot, is this current system right now, is it safe or unsafe? आप कैसे डिटरमिन करोगे? इसका सेफ्टी एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर मैं एक शॉर्ट में लाइन में एक लाइन लिखूंगा, सिस्टम इज सेफ, सिस्टम इज सेट टू बी सेफ if and only if the need of all processes can be satisfied with all the resources, with the available resources. With the available resources. If the need of all processes can be satisfied with the available resources, then we say that the system is safe. मैं सिर्फ 2 मिनट दूंगा. Apply that algorithm which I have written there and tell me whether this system at this point of time, ऐसे कई questions आए हैं previous year में, is this system at this point of time, is it safe or unsafe? बताइएगा मुझे. Total A has 10 copies, B has 5 copies, C has 7 copies. This is the maximum demand of each process. This is the current allocation and this is the current available. Is the system safe or unsafe? Simple question, 2 mark question. चलिए वर्कआउट कीजिएगा 2 मिनट के लिए and let me know, is the system safe or unsafe?
Is it safe or unsafe? Not safe. Rakshit, do it carefully. चलिए मैं वर्कआउट करके बताऊंगा आपको. Those who cannot understand, please have a look on board. Please have a look on board. सबसे पहले बच्चों आपने जो वर्कआउट करना है वो है नीड. आपने डिटरमिन करना है वैल्यू ऑफ नीड ऑफ ऑल द प्रोसेसेस फॉर रिसोर्सेस एबीसी. फॉर रिसोर्सेस एबीसी. ठीक है. तो यहां पर फिर से मैं लिख रहा हूं टास्क T0, T1, T2, T3, T4. टास्क, ऑल टास्क का आपने नीड डिटरमिन करना है. सो व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोसेस T0? मैक्स माइनस एलोकेशन 7 माइनस 0 7. यहां पे हम लाइन भी बनाएंगे. तो 7, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 0 3. फिर उसके बाद T1 की नीड क्या है? T1 की नीड है देखिएगा 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 0 2 एंड 2. T2 की नीड क्या है? 9 माइनस 3 6 0 0. चलिए T3 0 1 1. देन T4 4 3 1. ये है need of all processes. We said that the system is safe if and only if the need of all processes can be satisfied with the available resources in some order. तो हम यहां पर चेक करेंगे can we satisfy the need of all the processes in some order at time T0. Let us start. Can I satisfy need of 743 from 332? No, I cannot satisfy. Then I go for T1. 122 can I satisfy from 332? I can satisfy the need of T1. So at time T0. T1. So if I after completing T1, what is going to happen? So I will give away 122 from 332 and then T1 will complete with 322 and then I will release the resources back. So my new available will become 532. 532. 200 is added to 332, it becomes 532. So now with 532, I cannot satisfy the need of T2, but I can satisfy the need of T3. So I will take up T3 next. T3. तो T3 की नीड सेटिस्फाई करने के बाद हमारा न्यू अवेलेबल क्या बनेगा? T3 का करंट एलोकेशन हम यहां ऐड कर देंगे, वो बनेगा 743. ये बन जाएगा 743. 743. Now with 743, I can take up the need of either T0 or T2 or T4. हम सीक्वेंस में जाएंगे. Let us complete the need of T4. So T4 need 431. I have 743. So after completing of T4, my new available will become 745. 743 plus 002, 745. फिर 745 के बाद क्या होगा? We can take up T0. We can take up T0. तो T0 का अगर satisfy करोगे तो आपका new available क्या बन जाएगा? 010 should be added to this, so it becomes 755. फिर लास्ट में आप take up करोगे T2. Take up करोगे T2. T2 का allocation है 302. आप 302 यहाँ पर add करोगे, then it becomes 1057. So you have completed all the tasks, all the processes, and obviously when you after completing all the tasks, all the processes, you should get back original number of copies 1057. अगर ये 1057 आपने नहीं मिल रहे हैं, if you are not getting 1057, then that means you made a mistake somewhere. You made a mistake somewhere. Yes. No, I can have multiple safe sequences. I can have different safe sequences. You can have another one. You can have another one. So there can be multiple safe sequences also. So boys and girls, this is the approach of solving this problem. So therefore we say the system is perfectly safe. तो जब system safe होगा, then we go ahead with what is called, तो ये देखिएगा content of need matrix हमने कहा, उसके बाद हम resource request algorithm apply करते हैं. That is the actual main bankers algorithm. मतलब at any point of time some process like P1 is making a request of 102. So we have to decide whether this request should be granted or not granted. ये एल्गोरिथम डिसाइड करने के लिए जो एल्गोरिथम है उसका नाम है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम. उसकी बेसिक फिलॉसफी मैं यहाँ पे लिखूंगा, पूरा डिटेल तो हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, काफी लंबा है प्रॉब्लम. सो द प्रॉब्लम इज द रिक्वेस्ट initiated by any process. Request initiated by any process will be granted if and only if the resulting state
resulting state is safe. ये पॉइंट अगर आप याद रखोगे, then I'm very sure you will never go wrong with safety algorithm, resource request algorithm. कोई भी प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट है, you can grant only if the resulting state is safe. If it is safe, then you can grant. If it is not safe, then you can't grant or you don't grant it. तो ये एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे लिए हैं, definitely we can see that it can be granted because the resulting state is safe. उसी तरह बाकी के जो दो एग्जाम्पल्स हैं आप बाद में कर सकते हो, and you can verify yourself that these two requests cannot be granted. So इस बेसिस पर this is a very important problem, star problem. ये बेसिस पर काफी क्वेश्चंस गेट में आए हैं. So this is one area from where you can expect lot of you can still expect questions because lot of questions have been asked in earlier papers based on this ideology. तो ये एक एरिया है डेडलॉक्स में जहां से आप फ्यूचर में 2024 या बियॉन्ड you can definitely expect some numerical problem because it has been asked in previous papers. अब रही बच्चों लास्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है डेडलॉक डिटेक्शन. डेडलॉक डिटेक्शन फॉलोड बाय रिकवरी, राइट. तो यहां पर आप डेडलॉक डिटेक्ट करोगे, फिर उसके बाद रिकवर करोगे. डिटेक्शन के लिए बच्चों दो एल्गोरिथम्स है. लेट मी टेल यू. वन एल्गोरिथम इज फॉर सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप एंड द अदर इज फॉर मल्टी इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप. मतलब अगर आपके पास सिस्टम में सिर्फ सिंगल रिसोर्स के टाइप सिंगल रिसोर्स टाइप रिसोर्सेस है और दूसरा मल्टी इंस्टेंस में है, तो आप डिटेक्शन कैसे करोगे. सिंगल इंस्टेंस के लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. वी हैव ए टूल कॉल्ड रिसोर्स वेट फॉर ग्राफ. वेट फॉर ग्राफ देखिएगा, डायग्राम समझने से समझ में आ जाएगा. दिस वेट फॉर ग्राफ. यहां पर कुछ एरोज मिसिंग है. लेट मी ड्रॉ द एरोज. All these resources are single instance. All these resources are single instance. Single instance का मतलब एक कॉपी. So I have processes P1, P2, P3, P4, P5. This is my current state. This is my current state. What is the state? P1 is allocated R2, waiting for R1. ठीक है. R1 is in use by P2. P2 is requesting R3. P2 is requesting R4. P3 is allocated R4. P3 is requesting R5. इस तरीके से समझना है. So now the question is, majority of the processes are blocked. See here, P1 is blocked, P2 is blocked, P3 is blocked, P4 is blocked, P5 is not blocked. So out of 5, 4 processes are blocked. जब deadlock होगा तो processes block होंगे. So blocking of a process is a symptom for deadlock. तो यहाँ पर operating system deadlock manager will apply deadlock detection test in the form of a wait for graph. मतलब ये इस given resource allocation graph से you will derive another graph by name वेट फॉर ग्राफ. देखिएगा कैसे डिराइव करें, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज फॉलो मी. विल डिराइव अनदर ग्राफ कॉल्ड वेट फॉर ग्राफ. वेट फॉर ग्राफ का कॉन्सेप्ट ये है कि यू विल हैव ओनली प्रोसेसेस एज वर्टिसेस, नो रिसोर्स वर्टेक्स. ओनली प्रोसेसेस एज वर्टिस. P1, P2, P3, P4, P5. मतलब यहां से मैंने सिर्फ प्रोसेसेस ले लिए. उसके बाद वेट फॉर एडजस्ट हम ऐड करेंगे. कैसे ऐड करेंगे देख लीजिएगा एक बार बच्चों. P1 is waiting for resource R1 which is right now in use by process P2. मतलब ये resource को मैं collapse कर दूंगा and I will put this edge directly here connecting like this. So P1 is waiting on P2. उसी तरह P2 is waiting on P5. P2 is waiting on P3. P2 is waiting on P4. P3 is waiting on P4. P4 is waiting on P1. Right? इस तरीके से आप wait for graph बनाओगे. And in this wait for graph we are going to run cycle detection algorithm. Cycle detection algorithm. Algorithm to detect the presence of a cycle in resource allocation graph. Like depth first search, breadth first search आप apply कर सकते हो. Like for example, do we have a cycle here? हाँ sir, we have a cycle. Like what is the cycle? Largest cycle P1, P2, P3, P4, and then P1. The presence of this cycle implies deadlock always because the type of graph is single instance resource. तो single instance resource में हमने हमेशा कहा whenever there is a cycle, there is always a deadlock. So remember this point. Step 1, step 2, step 3. Derive wait for graph, check for cycle. If there is a cycle, there is a deadlock. क्यों? हमारा basic rule था कि जब भी resource allocation graph में cycle होगी और resource instance single instance अगर है तो definitely deadlock होगा, definitely deadlock होगा. So this is single instance resource. उसी तरह general algorithm multi instance resource के लिए you have same algorithms like what we have. So look at the data structures. We have allocation matrix, we have request matrix, we have available.
जस्ट लाइक आवर सेफ्टी एल्गोरिथम। तो यहां पर भी उसी तरह जिस तरह हम सेफ्टी एल्गोरिथम में चेक किए थे, इफ द रिक्वेस्ट, एक ही लाइन का एल्गोरिथम है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इफ द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस can be completed, can be satisfied or completed, then the system is safe. System is safe का मतलब no deadlock. System is safe का मतलब no deadlock. अगर किसी तरह if you are able to satisfy the request of all the processes, like in this case if you take up, first I can satisfy T0, then I can satisfy T2, then I can satisfy T1, then I can take up T3 and T4. So therefore I say system is safe, there is no deadlock. लेकिन अगर आप 2 or more processes की request satisfy नहीं कर पा रहे हो, then we say system is in deadlock. That's a very simple algorithm for deadlock detection. इसके basis पर भी गेट में questions आए हैं पहले. So you have to apply it in that fashion. फिर उसके बाद देखिएगा बच्चों, recovery modules क्या है? There are 2 broad approaches for recovering the system from deadlock. One is called process termination. Look at this. Process termination is the first strategy. That means you kill the process, abort the processes which are involved in deadlock. तो यहाँ पर आप 2 approaches 2 तरीके से कर सकते हो. You can follow 2 approaches. One is kill all. You can apply the strategy of kill all deadlock processes. या फिर आप बोलोगे kill one at a time. Kill one at a time. Either you kill all or you kill one at a time. Kill all will make sure that there is no deadlock now. Kill one at a time means you can save some processes. लेकिन कुछ questions है जो आपको address करना होगा in applying these strategies. I have written down here, आप बात देख सकते हो. What strategy can be used for selecting a process for killing, like priority of the process, how long the process has computed, resources that the process is using, resources that the thread needs to complete. There are several questions based on which you can decide which thread should be killed for process termination. उसी तरह दूसरा जो strategy है वो है for recovering the system from deadlock, वो है recovery, resource preemption. Resource preemption मतलब you preempt the resource from the process and roll back the process to the state from where it got preempted. तो either of the strategies will definitely prevent deadlock, but general जो problem हमें face करना होगा in both the strategies is nothing but starvation. Because if a process is repeatedly getting terminated, repeatedly getting involved in deadlock and repeatedly getting terminated or repeatedly getting preempted of its resource, then such a process will basically suffer from starvation. So therefore, जब nutshell में हम ये बोलेंगे, it is possible to remove deadlock, it is possible to detect and recover the system from deadlock at the common cost of the problem of starvation. Starvation कैसे होगा? If a process is repeatedly getting involved in deadlock and repeatedly getting terminated or repeatedly getting preempted of its resources, then basically the processes will suffer from the problem of starvation. रक्षित, वर्किंग ऑफ द एल्गोरिथम यहाँ पे सेफ स्टेट की तरह रहेगा. सेफ स्टेट में जैसा हम वर्क किए थे वैसे ही वर्क करेगा. देखिएगा यहाँ पे एक बार समझिए. रक्षित, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. Process T0 is not blocked, process T2 is not blocked, T1 is blocked, T3 is blocked, T4 is blocked. I want to know, there are 3 processes blocked. I want to know whether system is safe or deadlocked. Available copies are 0, 0. So I'm saying very simple, read the statement. If the request of all processes, ये request of all processes can be completed, अगर हम किसी भी order में सारे processes की request complete कर पा रहे हैं, then we say system is safe. Then we say system is safe. Otherwise we say system is not safe. चलिए work करेंगे, very simple. So first I can start with whom? I can start with T0. देखिएगा, Rakshit, please have a look. I start with T0. T0 wants 0, 0. I have 0, 0, 0. T0 get completed. Complete होने के बाद T0 क्या करेगा? अपने resources release कर देगा. तो मेरा new available क्या बनेगा? 0, 1, 0 बनेगा. 0, 1, 0. Now 0, 1, 0. Can I satisfy the request of this? No. Because this fellow want 2. I have 0 copies. Can I satisfy the request of T2? हाँ, I can satisfy the request of T2. Right? T2. Then after completing T2, मेरा new available क्या बन जाएगा? 0, 1, 0 plus 3, 0, 3. So it becomes 3, 1, 3. It becomes 3, 1, 3. 0, 1, 0 plus 3, 3, 0, 3. Allocation of T2. Now with 3, 1, 3, I can satisfy the request of T3 thread. Task T3. So it want 1, 0, 0. I have 3, 1, 3.
तो फिर अगर T3 कंप्लीट होने के बाद अपने रिसोर्सेस वो रिलीज कर देगा। 211 हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा 524। With 524 next I can take up thread or task T4 T41002 I have 524। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा T4 तो मेरा न्यू अवेलेबल बन जाएगा 526। फिर उसके बाद हम लेंगे T1 तो T11 200 I have 526 so then it will get completed, it will release 726। so total number of copies of ABC are 726। look at that 726 I got back। so I say system is safe, there is no deadlock। तो हम बोलेंगे there are 3 block processes, majority are blocked but still there is no deadlock। this is how it works, just like safety algorithm। अगर ये रिक्वेस्ट कोई ऑर्डर में आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो सिस्टम इज सेफ, अगर नहीं कर पा रहे हो सिस्टम इज इन डेडलॉक, एज सिंपल एज दैट, फिनिश। चलिए तो बच्चों ये है स्ट्रैटेजीज फॉर डीलिंग विथ डेडलॉक। अब है वी विल टेक अप सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, विल टेक अप सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। पहले एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेंगे, देखेंगे कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। तो बच्चों ये एक रीसेंट पेपर का क्वेश्चन है, एमएसक्यू है। मैं चाहूंगा आप पूरे ऑप्शंस अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा एंड आफ्टर रीडिंग यू टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डेडलॉक में काफी रीजनिंग क्वेश्चन भी आए हैं, तो उसका आपको कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड अगर आपका अच्छा हो तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जैसे ये क्वेश्चन है। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Saksham is saying A and D. What about other people? Rakshit is saying A and C. Okay. Arthi Annamala is saying ACD. Okay, let's start. Let us start the options, exploring the options. See the first one. Circular weight is a necessary condition for the formation of deadlock. Absolutely correct. Second option. In a system where each resource has more than one instance, multi-instance, a cycle in its wait for graph indicate the presence of a deadlock. Not always indicate the presence of deadlock. ऐसा नहीं है, right? So cycle is only a necessary condition but not sufficient to say that every time deadlock has happened. So therefore this is incorrect.
If the current allocation of resources to process leads the system to an unsafe state, then deadlock will necessarily occur. No, every unsafe is not deadlock, but every deadlock means unsafe. Every unsafe is not deadlock, but every deadlock means unsafe. So therefore, this is not always true. If the resource allocation graph of a system, if every edge is an assignment date, अगर पूरे assigned हो, then the system is certainly not in deadlock. क्योंकि deadlock होने के लिए hold and wait होना चाहिए. सिर्फ hold is not deadlock. Only hold is not deadlock. तो यहां पर कह रहा है only hold. So बच्चों, आपका करेक्ट आंसर बनेगा A and D. A and D. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक सॉल्व करेंगे. टेल मी द आंसर फॉर दिस. रीड दिस क्वेश्चन. दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट PYQ. सॉल्व कीजिएगा प्लीज. सॉल्व कीजिएगा. Option is D. Not saved, not deadlock. How is it possible? Tech and games. Be careful, boys and girls. चलिए स्टार्ट करेंगे. There is a resource by name tape drives. There is a resource by name tape drives. There are 9 copies of it. The current allocation and maximum requirement is there. So therefore, balance or need of every process क्या होगी? Need of every process होगी max minus allocation. मतलब this fellow need 4 copies, this fellow need 6 minus 1 5 copies, this fellow need 5 minus 3 2 copies. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ. नेक्स्ट क्या है? अवेलेबल कॉपीज हमें कितने हैं डिटरमिन करना होगा. अवेलेबल कॉपीज कितने हैं डिटरमिन करना होगा. ठीक है. सो हियर हम बोलेंगे अवेलेबल ऑफ टेप ड्राइव. कैसे करेंगे बच्चों? दिस इज 9 में से हमने 3 यहां दे दिए, 1 यहां दे दिए या 3 यहां दे दिए. 6 प्लस 1 7. तो आउट ऑफ 9 आई हैव गिवन 7 कॉपीज. मतलब बैलेंस मेरे पास कितने रहे? 2 रहे. तो हमें यह डिसाइड करना है, can I satisfy the need of all these 3 processes with these available copies in some order, in some way? बस अगर हम satisfy कर पा रहे हैं तो मतलब there is no deadlock, system is safe. तो चलिए देखेंगे कर पाते हैं या नहीं. So can I satisfy the need of P1? No. P2? No. P3? Yes. तो after completing P3, my new available will become 2 plus 3 5. क्यों? क्योंकि ये 3 जो करंट allocation है ये रिटर्न आ जाएगा 2 में, 5 हो जाएंगे. So now the question is, with 5 copies, can I satisfy the need of P1? हाँ बिल्कुल. So P1 का need satisfy करने के बाद मेरा available क्या होगा? Current allocation हम ऐड कर देंगे. 3 plus 5 it will become 8. ठीक है. फिर उसके बाद P2 can be taken up, right? Then P2 can be taken up. This fellow want, 1 copy is returned back. So therefore my total allocation will become 9. So therefore in the order P3, then P1, then P2, I can complete the processes in this order. So therefore हमारा correct option बनेगा safe not deadlock. Safe not deadlock. इस तरीके से वर्क करेंगे क्वेश्चंस. ठीक है. सो चलिए और एक क्वेश्चन लेंगे. एक रीजनिंग क्वेश्चन है बच्चों.
सोच समझ के बताइएगा। जैसा डाइनिंग फिलोसोफर का प्रॉब्लम है उसी तरह ये एक प्रॉब्लम है गैल्विन में। मैं जनरली एक्सपेक्ट करता हूं कि कभी ना कभी कोई गेट एग्जाम में ये क्वेश्चन या इसका वेरिएंग क्वेश्चन आएगा, राइट? तो मैं चाहूंगा यहां पर हम डिस्कस करें ये क्वेश्चन। लेट अस ट्राई टू वर्क आउट। कम ऑन। द फॉलोइंग इज अ क्वेश्चन अबाउट डाइनिंग कंप्यूटर साइंटिस्ट। जैसा डाइनिंग फिलोसोफर है, डाइनिंग कंप्यूटर साइंटिस्ट। चलिए रीड करिएगा बच्चों, आप खुद ही से रीड करिएगा एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर। यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, डज दिस प्रोटोकॉल कैन इट रिजल्ट इन डेडलॉक? ये पूछा जा रहा है, आपको बोलना है हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। देखिए कौन बताएगा इसका आंसर। Will there be a deadlock possible or not is the question here. Consider the following policy for eating and indicate if it can result in deadlock. Tech and Games is saying deadlock can occur. Come on, other people also please respond. क्या deadlock हो सकता है ये policy में? Please observe that this is different from dining philosopher problem. This is different from dining philosopher problem. Paras Prajapati is also saying deadlock can occur. I want other people also to respond. उसके बाद मैं start करूंगा discussion. Then I will start the discussion. Shubham Joshi is saying no deadlock. Okay. Saksham is also saying no deadlock. So some people are saying deadlock, some people are saying no deadlock. दोनों में conflict है. चलिए start करेंगे बच्चों. Let us try to review this question. देखिएगा अगर ये कंप्यूटर डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम होता विद 6 फोक्स एंड 6 फिलोसोफर्स तो डेडलॉक की पॉसिबिलिटी हो सकती थी. अब यहां पर जो है डिफरेंस है बच्चों डेडलॉक होने के लिए.
3 नाइव्स है, 3 फोक्स है, ये डिफरेंस है। चलिए हम यहाँ पे डायग्राम बनाकर अंडरस्टैंड करेंगे, डायग्राम बनाकर अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स से सॉरी, फिर यहाँ पर हम 6 प्रोसेसेस का ले लेंगे। एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4, 5, 6। These are the 6 डाइनिंग कंप्यूटर साइंटिस्ट। और जो फोक्स और नाइफ्स है ना वो अल्टरनेट अरेंजमेंट्स में है। तो दिस इज फोर्क, हम एफ लिखेंगे, फोर्क, फोर्क। फिर यहाँ पे नाइफ आएगी, फिर यहाँ पर फोर्क आएगा, फिर यहाँ नाइफ, फिर यहाँ पर फोर्क आएगा। ये एफ फोर्क है, और नाइफ्स को हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर लेंगे, नाइफ्स को दूसरे कलर से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये नाइफ है, के मतलब नाइफ, यहाँ पर भी के मतलब नाइफ, और यहाँ पर भी के मतलब नाइफ। So let us name the computer scientist. Let us name the computer scientist. Computer scientist 1, computer scientist 2, computer scientist 3, computer scientist 4, computer scientist 5, computer scientist 6. ये हमारा अरेंजमेंट है। फोर्क नाइफ, फोर्क नाइफ, फोर्क नाइफ, 3 forks, 3 knives. The protocol is, see this, attempt to grab the fork that sits between you and your neighbor until you are successful. मतलब सबसे पहले everybody who is, मतलब every computer scientist will try to take the fork, will try to take the fork. If successful, attempt to take the knife. मतलब पहले आप फोर्क लोगे फिर नाइफ ट्राई करोगे, पहले फोर्क फिर नाइफ, ठीक है ना? पहले फोर्क लोगे फिर नाइफ, फिर उसके बाद ईट एंड देन रिटर्न, रिटर्न। चलिए अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल लिसन टू मी। फर्स्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट 1 आएगा, कंप्यूटर साइंटिस्ट 1। लेट अस से, अगर मान लीजिए विदाउट प्रीएम्पशन एग्जीक्यूट करो, आप डाइनिंग फिलोसोफर रहने दीजिए या डाइनिंग कंप्यूटर साइंटिस्ट, नो डेडलॉक, अगर विदाउट प्रीएम्पशन। लेकिन प्रीएम्पशन से प्रॉब्लम हो रहा था डाइनिंग फिलोसोफर में, यहां पर भी हम प्रीएम्प्टिव मोड में ट्राई करेंगे, प्रीएम्प्टिव मोड में ट्राई करेंगे। सुनिएगा बच्चों, सबसे पहले कंप्यूटर साइंटिस्ट विल ट्राई फोर्क, मतलब ये फोर्क ट्राई करेगा वो, ये फोर्क और नाइफ इन दोनों के लिए है, ये फोर्क और नाइफ इसके लिए है, ये फोर्क और नाइफ इसके लिए है, राइट, ये फोर्क और नाइफ इसके लिए है, ऐसा सोचना है। सो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैज पिक्ड अप फोर्क। कौन सा फोर्क? ये फोर्क पिक्ड अप किया। इसके बाद बिफोर इट ट्राई द नाइफ इट गॉट प्रीएम्प्टेड, फिर कंट्रोल आया कंप्यूटर साइंटिस्ट 2। सुनिएगा बच्चों, कंप्यूटर साइंटिस्ट 2, कंप्यूटर साइंटिस्ट 2 विल ट्राई फोर्क, ये फोर्क ट्राई करेगा, क्या अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है, इट विल टेक द फोर्क, इट विल टेक द फोर्क, सक्सेस, यहां तक सक्सेस है दोनों। फिर इसके बाद क्या होगा? प्रीएम्प्ट होगा बिफोर टेकिंग द नाइफ, कंप्यूटर साइंटिस्ट 3 पे आइएगा, कंप्यूटर साइंटिस्ट 3 विल ट्राई टू टेक द फोर्क बट दिस फोर्क इज नॉट अवेलेबल फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट 3, अनसक्सेस, ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। फिर देखिएगा कंप्यूटर साइंटिस्ट 4 पे आइए, 4, computer scientist 4 will try to take the fork, this fork is available, so therefore CS4 will take fork available, preempt. Computer scientist 5 पे आइएगा, 5 will try to take the fork, not possible, get blocked. Computer scientist 6 पे आइएगा, it will try to take the fork, fork is already picked up, so it will get blocked. ऐसा सिचुएशन है मेरे पास, टेक एंड गेम्स प्लीज फॉलो। देखिएगा, now 3 are blocked, CS3, CS5 and CS6, बट द क्वेश्चन इज, अब ये जो 3 प्रोसेसेस है, ये 3 जो प्रोसेसेस है, CS1, CS2, CS4, कैन दे गेट ब्लॉक? कैन दे गेट ब्लॉक? ट्राई करेंगे यहां सर। कंट्रोल विल कम टू CS1, CS1 will try to take the knife, CS1 will try to take the knife, let us say it is successful, let us say it is successful, knife available है, it has taken the knife, it has taken the fork, it has taken the knife, ठीक है। इसके बाद CS2 will try knife, knife is already picked up by CS1, so therefore it will get blocked. CS4 पे आइए, CS4 it has taken the fork, knife is available, yes it is available, so this fellow can take the knife. मतलब 2 philosophers हमेशा, अगर preemptive mode में execute करो आप, 2 philosophers, 2 philosophers can definitely CS1
and CS4 in our example can definitely take fork and knife and never there will be a deadlock. कभी भी deadlock नहीं होगा. एक philosopher तो जरूर, एक computer scientist always will be successful in taking both fork and knife. So therefore, this will make sure that there will never be a deadlock. Never a deadlock. ये सीक्वेंस में अगर आप फॉलो करोगे तो डेडलॉक कभी भी नहीं होगा. दिस टोटली ऑपोजिट टू डाइनिंग फिलोसोफर. यही सीक्वेंस अगर आप डाइनिंग फिलोसोफर में फॉलो करोगे तो डेडलॉक होगा, लेकिन यहां पर नहीं होगा. हाँ, लेटर CS1 विल रिलीज फोर्क एंड नाइफ एंड दैट कैन बी गिवन टू CS2. CS2 कंप्लीट हो जाएगा तो CS3 जाएगा. CS3 कंप्लीट होने के बाद दूसरे प्रोसेसेस जो अनब्लॉक है वो अनब्लॉक हो जाएंगे. तो डेडलॉक बच्चों कभी भी नहीं होगा. डेडलॉक कभी भी नहीं होगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों. मैं जनरली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन कभी ना कभी गेट एग्जाम में कोई ना कोई फॉर्म में आएगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दीज क्वेश्चंस, विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, बाय मिस्टेक, इन अ हरीड वे, they think that is dining philosopher and they select the option deadlock is possible. हालांकि deadlock यहां पर कभी भी नहीं होगा. Yes, if I am successful in taking the fork, then my neighbor cannot take the fork and he cannot take the knife, so I will definitely go to it, and if I go to it others can go to it. मतलब यह है कि सिंपल पॉइंट कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट अगर ईटिंग मोड में जा रहा है तो बाद में दूसरे भी जाएंगे. अगर कोई भी एक सक्सेसफुल है तो definitely there is no deadlock. That is what I am trying to say. तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कीजिएगा. PYQ अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा फॉर द डेडलॉक चैप्टर एंड देन यू कैन बिकम मास्टर ऑफ डेडलॉक्स. ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी थे डेडलॉक के. सो वर्कआउट PYQ जितना आप ज़्यादा करोगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उतना अच्छा होगी. PYQ सॉल्व करने के बाद ही आप टेस्ट सीरीज पे जाइएगा, वरना आपको मुश्किल होगी. बिकॉज जनरली ये परसेप्शन देखा जा रहा है कि बच्चे स्टूडेंट्स आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू टेस्ट सीरीज एंड PYQs, which is against the preparation norms of GATE. Saksham, now you can try other policies. Suppose for example if I have all forks and all knives, then it will become dining philosopher. आप दूसरा try करो sequence. If I take knife and then fork, or if everybody take fork, right? Fork and knife reorder कीजिएगा आप. Odd number philosophers take fork and even number philosophers take knife, then what is going to happen? So I can have different policies, I can have different variations for this, and you can try different variations. हाँ, बाद सीक्वेंस में डेडलॉक हो सकता है. Suppose if I say that maybe odd number follow taking fork and then knife, and even number follow taking knife and then fork, and then you try what is going to happen. ऐसे आप वेरिएशंस कर सकते हो. ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए यहीं पर 7:40 हो रहे हैं. सो यू हैव अदर क्लास परहैप्स, सो we'll stop here and the end of the chapter also. So next class we will start a new chapter on memory management. Memory management में दो parts में हम discuss करेंगे. First on basic concepts like we'll talk about partitions, we'll talk about abstract view of memory, and then we'll talk about paging, segmentation, segmented paging. फिर उसके बाद सेकंड सेशन में हम वर्चुअल मेमोरी में बात करेंगे. दो सेशन रखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के, एक बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड सेकंड वन इज वर्चुअल मेमोरी. या टेक एंड गेम्स, प्लीज टेल मी. टेक एंड गेम्स, टेल मी व्हाट डू यू वांट. यू आर सेइंग वन रिक्वेस्ट. Can you please take paging first because then I see exam on 12. ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में हम पेजिंग ही डिस्कस करेंगे. I will discuss paging. The next class will be on Monday, I suppose. So boys and girls, take care, continue your preparation, do your hard work, and all the best for your preparation and the forthcoming exam. So we'll take leave. Thank you so much. Take care. Good night.